Now, moving to the system, how the circulation is being carried out. First of all, the circulation is divided into two categories. One is called as pulmonary circulation, the other one is called as systemic circulation. Now, how does it is being carried out? The blood from upper and lower parts of your body is being gathered inside the right atrium. मतलब ब्लड पूरा कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम अपर वेना कावा एंड लोअर वेना कावा, ऊपर की बॉडी से और नीचे की पोर्शन ऑफ द बॉडी, इन सब जगह से ब्लड कलेक्ट होकर राइट आर्टरियम में आ रहा है. राइट आर्टरियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. लंग्स में फिल्टर होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा. ऑक्सीजन विल बी टेकन अप, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन अप. ओके, दिस मच फ्लो इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्यों? पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. ओके, so this circulation, as it is being connected to the lung, we call it as pulmonary circulation. I'm repeating again, the blood from each part of the body is being collected through vena cavas from the upper body part and lower body part of vena cava, then collected and poured inside the right atrium. right atrium से जाएगा right ventricle में with the help of tricuspid valve. राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. इनसाइड द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवर हियर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड. दिस मच इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. देन स्टार्ट्स योर सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? द ब्लड फ्रॉम लंग्स इज देन brought by pulmonary veins and poured inside the left atrium. Left atrium से with the help of bicuspid valve it moves towards the left ventricle. Left ventricle से वो जाएगा main aorta के पास. Aorta, that is the main artery, and through aorta it is being circulated through the whole body. This is called as systemic circulation क्योंकि वो aorta से वो each and every system में जा रहा है. I hope you might have understood the whole circulation. Okay, this is this much only. You can draw the ray chart for this circulation. Okay, below the figure also the circulation is being explained. यहाँ पे भी वही चीज़ें explain की है. Okay, see, यहाँ पे blood आया राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इनसाइड द कैपिलरीज, इनसाइड द कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज होने के बाद ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियम से आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऊपर की तरफ नीचे एरोटा से पूरी बॉडी में. सो दिस थिंग्स टेक्स प्लेस. यू कैन सी एक साइड में आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, दूसरे साइड में प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है. सो दिस इज़ द मेन सर्कुलेशन. ओके, one more thing is been explained over here, that our heart is called as the circulation is called as double pumping circulation. Okay, double flow, we called it as double circulation. और डबल सर्कुलेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्लड एक बार, डबल सर्कुलेशन क्यों बोला है? बिकॉज ब्लड एक बार आपके बॉडी में एंटर हो रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर एंटर हो रहा है एंड फिर वापस जा रहा है. सो एज इट इज़ बीइंग पम्प ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट एंड इन, वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन. ओके, दिस रीजन इज मेनली बीइंग आस्क्ड. In this paragraph, some animals are being involved, the respiratory and this all things are explained. Like in fishes, you can see on the other hand, fish have only 2 chambers. जो जैसे मैंने आपको बताया, different examples दिए थे, how the vertebrates and other organisms have. Okay, mammals में 4 होता है to maintain the body temperature. Reptiles में 3 chambers होते हैं. Fishes are 2 chambers. Even the birds are 2 chambers. Okay, that is being explained. Double circulation is also being cleared to you. Okay, tubes. Moving to these tubes or the blood vessels. Okay, the blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries. Arteries will always carry oxygenated blood.
दे आर थिक इन दी स्ट्रक्चर. थिक क्यों है? क्योंकि ब्लड यहाँ पे हाई प्रेशर में फ्लो हो रहा है. ओके. While veins in contrast are having deoxygenated blood, the walls are thin and blood which flows is over here in very low blood pressure. Okay. Difference between arteries and veins are normally being asked. You can see arteries are the vessels which carry blood away. This is one more point. 4 points which are being there, which will carry the blood away from the heart to various organs. In return, veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. Blood emerges from the heart under high blood pressure. Instead, they have they do not have thick walls because blood is no longer under pressure, while the arteries have thick and elastic walls. So you can see the difference between arteries and veins. I am repeating again. First point, arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Arteries carry blood away from heart to various organs, while veins carry blood from each and different organ back to the heart. Arteries have thick wall, veins have thin walls. Arteries में blood high pressure में flow रहा है. The blood inside the arteries flow under high pressure, while inside the veins it flow under low pressure. Both these are united together at a point which are called as capillaries. Capillaries, this is the smallest vessels which have walls, one thick, one cell thick, and are called as capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cell takes place with this thin wall only. They join together to form veins and convey blood away from the organ or tissue. Arteries break down होंगे capillaries में. Arteries divides into smaller and smaller vessels to become capillary. Capillaries then again unite to form the veins. Okay. This is about arteries and veins. Clear? And capillaries. Over here, one point has been explained, that is blood pressure. The machine, the force that exerts against the wall of a vessel is called as blood pressure. The machine which is used to calculate this pressure is called as sphygmomanometer. The normal range of systolic means contraction, diastolic means relaxation. The normal value of systolic is about 120 mm of Hg, that is mercury, and diastolic is about 80 mm of Hg. Okay, if the pressure increases or decreases, we call it as high blood pressure. High blood pressure is called as hypertension, caused by the constriction of arterioles, मतलब contract, area कम होता जा रहा है. Okay, which results in the resistance to blood flow and may rupture an artery and internal bleeding. सिंपल है. एक नॉर्मल पाइप है, पाइप का मैं एरिया अगर कम कर दूँ तो पानी फोर्स में जाएगा तो हो सकता है पाइप धीरे धीरे फटने लगे. जितना एरिया उसे चाहिए अगर उतना एरिया नहीं मिलेगा. सेम थिंग हैपन्स इन ह्यूमन बॉडी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, arteries, veins and everything. Okay, in the next one we'll see the components of the blood. Clear?